Alright, so I'm going to share my screen. Let me know if the screen is visible, okay? Can you see my screen? Okay, good. Alright, so in the demo, I also showed you guys the slide, but I'm just going to give you a little, again, like a little introduction of it so that we're familiar with whatever we're doing, a little review. Alright, so the first month we are having 2 to 3 topics, and then in the second one we're again having 3 topics. We have basic computer, which we're starting onwards from today. It includes all the important terminologies, the proper use of computer, enhanced typing speed. We are going to be working on typing speed starting today. I'm going to show you all the keys and everything. So once you get familiar, and then in each of the class, you guys will be um working on your typing speed daily. So before class, afterwards this class, you will be having a homework, a little task of working on your typing speed. I will be sharing the games with you, and then daily, on daily basis, whenever you attend the class, the first 10 to 15 minutes we're going to give towards our typing speed. All right, so first we're going to check how much of a typing speed you guys basically have, because when students come to me, they're basically having their typing speed like not more than 10. They have like 5 or 2 or something, and they're typing with like 2 fingers only. I will be trying to increase your proper writing, so proper typing speed, and that's why we're going to do it daily. So afterwards, after the end of this like 2 months, you will be having like a proper typing speed where you will be able to type with all your fingers, and you will be having like a very very faster version of typing speed, maybe more than 30 or 40, which is amazing. Okay, then afterwards of also basic computer also includes a little terminologies. There will be some boring slides for you guys where we will be talking about a little computer. इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में होगा, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में होगा. It will be just like 1 to 2 days only. ताकि थोड़ा सा just familiar हो जाए आप लोगों को, थोड़ा सा you will get in your mind what CPU is, what the parts work like. ताकि हम फ्यूचर में जाके जब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें, हम बड़ी बड़ी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस यूज़ करें, तो आप लोगों को आप लोग familiar हो कि oh I know what you're talking. So that's how you will increase your professional speaking. All right. So after this basic computer, we will go towards our Microsoft Word. Microsoft Word, in here we will be creating different CVs, different resumes, different certificates, and then at the end of the course, you will be able to develop your own resume. जिसमें आप अपनी सारी स्किल्स डाल सकते हो कि आपको एम एस एक्सेल आता है, आपको पावर पॉइंट आता है, आपको आउटलुक आता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, कैनवा आता है. So you will be able to do all of those stuff. All right. Then yeah, then after that, okay, Microsoft Word के अंदर we also have mail merge. उसके अंदर थोड़ा सा Outlook का part भी आएगा. मतलब basically हम पूरा Microsoft Word के जितने भी options होते हैं, हम उन सबको जाके explore करेंगे. So none of the options are left. तो आपको पूरा Microsoft Word के ऊपर you will have your hand on. So you will know however to use all of these stuff. Okay. The first 3 days we will be doing our basic computer, and then inshallah, if you guys are quicker to catch on to stuff, we will be jumping on towards the Microsoft Word. Right after Microsoft Word, we have Microsoft Excel. जिसके अंदर we will be applying different formulas. We will be learning to do data entry. We will be creating certificates in that as well. We will be creating invoices in that. We will be creating our own financial statements in there as well. जिससे you guys will be able to, like, after this, आप अपने खुद की डेली एक्सपेंसेस, अपनी इनकम वगैरह सब जो है एक प्रॉपर एक्सेल की शीट के अंदर मेंटेन कर पाओगे, एंड दैट विल बी अमेजिंग. लाइक यू विल हैव योर ओन शीट जिसके अंदर आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी. So then afterwards maybe you can help even your parents, like create their own monthly sheets. तो इस तरह you will be able to balance your income, your salary or your savings, आपको pocket money मिल रही है, whatever. So you will be able to write it down as well. उसको formulas का यूज़ करते हुए उसको automate कर पाओगे. There are millions of formulas in Excel, and we will be doing the most important ones, and we will be learning data entry as well.
सो एक्सेल का एक और स्टूडेंट बेस्ड नीड भी होती है और एक प्रोफेशनल बेस्ड होती है. प्रोफेशनल बेस्ड ये होती है कि पर्सन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह क्रिएट करना आनी चाहिए. एंड दैट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग. For Murtaza, for you it will be a very big thing because you said you're 9 years old, and if you get to know how to create all of these stuff, that's like a very very big thing. कि अगर आपको एक्सेल के अंदर ये सारी चीज़ें क्रिएट करना आती हैं. Okay, and same for you, Karen. It will be amazing if you know how to do data entry at this age. Then you will be able to apply for different kinds of jobs and do data entry and attendance maintenance for different companies, big institutes as well. All right. So out of all of these, Excel and yeah, Excel is basically the most important part because इसके अंदर अच्छी खासी jobs जो हैं वो people can avail, and not just jobs, you can also use it for your personal work. All right. Then we have Microsoft PowerPoint and Outlook. You guys are able to hear me properly, right? Murtaza, are you able to hear me? Can you tell me on mic, please? Yes, I can hear you properly. Okay, okay, good. All right. Okay, then after this we have Microsoft PowerPoint and Outlook. Now, what does these both do? PowerPoint के अंदर we will be creating mind-blowing animated presentations and professionally send emails in Outlook. PowerPoint के अंदर we basically create different kinds of animated presentations that I showed you in the demo class as well, and we will be creating them with a lot of animations, a lot of cool stuff. हम brand की different जो है presentations बनाएंगे, हम different छोटे छोटे टॉपिक्स की बनाएंगे. So afterwards, even for you, Kiran, in your professional life and in your educational life, you will be able to create different kinds of presentations. And then for others also, in your school or in your real life, you need any kind of presentations to create. कोई presentation आपकी होती है स्कूल के अंदर, कोई participation है, so you will be able to create different kind of presentation for that, and not just normal presentations. You will be able to create some animated ones by using some good templates as well. Okay, and Outlook is basically just like Gmail, where we send our emails, but it's a more professional version of it. And वो Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word इन सब के साथ जो है वो connected है. So Outlook will be a very fun topic to go through. It's a very small topic. PowerPoint and Outlook, both of them, they're very easy, and I'm pretty sure that you guys will be able to do that. Um, and then we have website designing. Website designing includes coding, जिसमें हम HTML and CSS पे coding करेंगे, and I will give you an idea of JavaScript as well. So maybe in the future, if you want to, you can opt for JavaScript course as well. So coding के अंदर हम HTML and CSS सीखे होंगे पूरा proper, that you will be able to create your website out of it as well through HTML and CSS. ये दो different computer languages हैं जिसके थ्रू जो है आप अपनी खुद की एक मतलब प्रॉपर वेब पेज जो है आप अपना खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, एंड इवन आफ्टर द कोर्स यू विल कीप क्रिएटिंग दैट बिकॉज आपके पास इतना एक अच्छा आइडिया आ जाएगा. And then at last we have Canva, our graphic designing. Now there are big platforms for graphic designing like Adobe Illustrator है, Adobe Photoshop है, लेकिन उसका सबसे बेसिक मतलब सबसे छोटा भाई उसका आता है Canva. कैनवा अगर आपको आ जाता ना, विच इज़ बेसिकली फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर से ज़्यादा कैनवा यूज़ हो रहा है आजकल, क्योंकि पीपल आर प्रेफरिंग मोर ईजियर वे रादर देन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ. ये बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कैनवा लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादा ईजियर है. When you are done with Canva, Murtaza, you did a basic part of Canva from my other course. इसके अंदर हम Canva की थोड़ी एडवांस चीज़ों में जा रहे होंगे. You'll be learning something new out of it. हम इसके अंदर UI डिज़ाइन भी सीख रहे होंगे. लाइक हम एक मोबाइल ऐप का इंटरफेस भी इसके अंदर क्रिएट करेंगे, विच इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग टू क्रिएट. जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे क्रिएट होता है वो आप कैनवा के अंदर क्रिएट करोगे. सो आफ्टरवर्ड्स यू कैन ऑल्सो बी अ UI डिज़ाइनर आफ्टर डूइंग कैनवा. सही. तो आफ्टर कैनवा यू विल गेट टू नो कि भाई कैनवा में आई थिंक आई हैड फन, सो नाउ लेट्स अपग्रेड टू अ बिगर प्लेटफॉर्म. मे बी देन यू विल ऑप्ट फॉर अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, गेट हायर्ड, डू वर्क ऑन दैट, फिग्मा. ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स पे आफ्टर कैनवा यू कैन गो, क्योंकि कैनवा अगर आपको आ जाएगा ना, अगर आपको इसमें मज़ा आता है, सो यू विल बी लाइक ओके नाउ आई थिंक आई शुड गो फॉर अ बिगर सॉफ्टवेयर. ओके. So basically, this course contains basic computer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, website designing, Canva. ये सब अलग अलग वर्ड है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बिल्कुल ही अलग वर्ल्ड है, एक्सेल अलग चीज़ है, पावर पॉइंट एंड आउटलुक तो बिल्कुल ही अलग है.
वेबसाइट डिज़ाइनिंग तो सबसे ज़्यादा अलग है और कैनवा भी अलग है। ये सारे जो है ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसमें मैनर्स के अंदर है। लेकिन जब आप ये डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट स्किल्स आप सीख लोगे ना तो आफ्टरवर्ड्स यू विल बी गेटिंग टू डिसाइड कि सबसे ज़्यादा मतलब मुझे कौन से टॉपिक में आया था एंड अब मैं उस टॉपिक के अंदर अपनी स्किल्स को ज़्यादा एक्सेल करता हूँ, अपनी स्किल्स को उस टॉपिक के अंदर ज़्यादा एनहांस करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल किसी को वेबसाइट डिज़ाइनिंग आउट ऑफ एवरीथिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो वो बोलेगा भाई मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग में अच्छा हूँ, अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स लेता हूँ, पाइथन का लेता हूँ, सी प्लस प्लस का लेता हूँ एंड मे बी आफ्टरवर्ड्स दे स्टार्ट डेवलपिंग वेबसाइट्स, एप्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स, राइट। एंड अगर किसी को कैनवा में इंटरेस्टेड है वो आगे जाके कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप ये वाले सॉफ्टवेयर पे चला जाएगा। किसी को एक्सेल में डेटा एंट्री में है तो वो डेटा एंट्री से बड़ी बड़ी चीज़ें सीखेगा, वो पाइवट टेबल सीखेगा, वो इनवॉइसेस बनाना सीखेगा, देन वो एसक्यूएल सर्वर पे आ जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लेके जा रहे हैं। तो इस कोर्स सम अप बेसिकली व्हाट दिस कोर्स इज डूइंग, it's taking you to different kinds of stuff and then afterwards you will be able to decide what thing you want to opt for. Give me 1 minute. All right. So, any questions up till yet in the course outline? Do you want to ask anything? Anyone? Murtaza, are you cleared? Yes. Kiran, what about you? Ayat? Okay, good. All right. So, let's move forward to our very first lesson. Okay. Um, all right. So if you can see my screen, this is our first slide. It basically includes a little history of computer and its little parts and everything. This will be the first thing that we will be doing, and afterwards I will be taking you towards the typing speed. All right. So let me check. All right. Okay, so let's get started. Um, all right. So our very first topic is the history of computers. Um, तो सबसे first जो computer हमारे पास आया था it was in the 1960. Then and you can see the different models over here, right? 1960 का किस तरह का था, 1980 का किस तरह था, then 2000 we had a full monitor and now the present one is like we mostly have laptops and phones. लेकिन 1960 to 1980 to 2000 and now the present there is a lot of difference. सबसे पहले जो computer आया था it was of a whole room. वो मतलब रूम के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ उसके बटन से डिफरेंट कीबोर्ड से माउस उसका कहीं और से चलता था. इट वाज अ वेरी वेरी बिग लाइक अ होल रूम जितना वो एक कंप्यूटर था. Then afterwards they in the 1960 they developed a smaller version of it, the 1980 2000, and then now today we're in 2023 and we have hands-on a lot of technology if you look forward to it. The computer as we know it today had its beginning with the 19th century English mathematics professor named Charles Babbage. He designed the analytical engine and it was this design that's called the basic framework of the computers today are based on. ये जो चार्ल्स बैबेज थे ही वाज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर हु डेवलप्ड द डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर जिस डिज़ाइन पे कंप्यूटर आज तक चलता है लाइक अ मॉनिटर देन अ कीबोर्ड एंड मॉनिटर के नीचे एक स्टैंड लगा हुआ है एंड देन देयर शुड बी अ माउस. दैट काइंड ऑफ एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन जो है वो चार्ल्स बैबेज ने क्रिएट की थी and that's why it is called the Antonov Berry computer, the ABC. All right. Now, there are different parts of computers. Number one, we have motherboard.
The motherboard is the backbone that ties the computer's components together at one spot and allows them to talk to each other. Without it, none of the computer pieces such as CPU, GPU, or hard drive could interact. Total motherboard functionality is necessary for a computer to work well. Now, motherboard जो है जो कंप्यूटर का मेन जो एरिया होता है, अगर मतलब मदरबोर्ड नहीं होगा तो बाकी का कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, क्योंकि ना कोई स्क्रीन का कोई कनेक्शन होगी, ना उसके अंदर कोई सीपीयू होगा। तो जो मेन सीपीयू होता है ना कंप्यूटर के अंदर, वेयर वी हैव ऑल द बटन्स एंड एवरीथिंग, तो अगर वो सीपीयू नहीं होगा तो मतलब हार्ड ड्राइव भी उसके अंदर है, सारा डेटा उसके अंदर है, सारी चीज़ें उसके अंदर से चल रही हैं, बैटरी उसके अंदर है. So if we do not have the CPU, the main motherboard, then obviously the computer won't even start. It's not even going to start. All right. So CPU is the motherboard. Then we have okay, what is CPU exactly? CPU is a portion of a computer that retrieves and executes instruction. The CPU is essentially the brain of a system. It consists of arithmetic and logical unit (ALU) and control unit and various registers. The CPU is often simply referred as the processor. Now, सीपीयू के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं. हमारे लैपटॉप में अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर हमारा कीबोर्ड लगा हुआ है ना, वो वाला पार्ट बेसिकली हमारा सीपीयू काइंड ऑफ है, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर है. सही है. मॉनिटर तो उसका मतलब अलग है, लेकिन बाकी जितना भी काम हो रहा है वो हमारे छोटे से कीबोर्ड टाइप की चीज़ के अंदर हो रहा है. नाउ कंप्यूटर के अंदर सीपीयू बिल्कुल अलग से हमें मिलता है. इफ आई कुड शो यू हियर CPU, this one. Okay, this is basically the CPU. This that we have in a computer, you guys have seen that before, right? So this includes all the basic processors. इसके अंदर Intel वगैरह कोई भी DVD डालनी है इसके अंदर, this kind of processor इसके अंदर included होता है. Everything that we need, like all the memories and everything. मतलब अगर CPU हमने connect ही नहीं किया होगा तो monitor on होके भी क्या काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई processes चल नहीं रहे होंगे. All right, getting this? Any problem up till yet? Anyone want to ask anything? No. Okay, good. All right. Then afterwards we have our monitor. Now monitor, it's a screen used for display. अब हम CPU लगा लें, keyboard लगा लें, हम mouse लगा लें, अगर हमें कुछ दिख ही नहीं रहा होगा सामने तो obviously there is no sense like to use a computer ना. The computer is made up of a monitor, a mouse, a keyboard, and most importantly a CPU. And the जो भी प्रोसेसेस सीपीयू के अंदर हो रहे हैं, सो वी नीड अ मॉनिटर टू सी इट. एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसके अंदर वो सारे प्रोसेसेस डिस्प्ले हो रहे हैं. ऑलराइट, दिस इज आवर कंप्यूटर मॉनिटर. This one. Okay, if we have monitors in our computer and we need them, obviously if we don't have them, कोई भी CPU के प्रोसेसेस का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमें नज़र ही नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है. Okay, then afterwards we have a graphics card. Can anyone tell me what is a graphics card? Any idea? Janat, would you like to tell us? You can tell me in the mic as well, Janat. Okay, the videos and stuff. Alright, Murtaza, do you have any idea? Kiran? No, miss. No? Okay, Kiran, what about you? No? Okay. Basically, what a graphics card is. A graphics card is a type of display adapter or video card installed within the most computing devices to display graphical data with high clarity, color, definition, overall appearance. अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर एक बहुत हैवी गेम इंस्टॉल की है. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ रोब्लॉक्स, या कोई भी गेम. मैंने कोई भी गेम इंस्टॉल कर लिया है अब, या फिर मैं अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमेज, मैंने जैसे ये जो स्लाइड मेरे पास चल रही है, मैंने इसकी इमेज अपने कंप्यूटर में ली हुई है. अब मैं अगर उसको ओपन कर रही हूँ तो उसके अंदर वो कलर्स कहाँ से आएंगे, वो जल्दी से लोड कैसे होगी, उसके अंदर ये हाई क्वालिटी कैसे आएगा, वो ब्लर आ रही है या नॉर्मल आ रही है, वो पुराने टाइप की तो नहीं लग रही, पुराने ज़माने टाइप का तो उसमें इफेक्ट नहीं आ रहा, येलो येलो तो नहीं आ रही, मतलब प्रॉपर कलरिंग आ रही है, प्रॉपर तरह से चल रही है, क्वालिटी अच्छी चल रही है. ये सब जो है ना ग्राफिक्स कार्ड पर डिपेंड करता है. अगर मेरा ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली पिक्चर मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी.
ग्राफिक्स कार्ड होगा तो कौन सा किस टाइप का ग्राफिक्स कार्ड है। बड़े सॉफ्टवेयर्स के लिए हमें एक बड़ा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप भी है, प्रीमियर प्रो भी है। प्रीमियर प्रो इज़ अ वीडियो एडिटिंग ऐप, फ़ोटोशॉप फ़ोटो एडिटिंग ऐप, एडोब इलस्ट्रेटर कार्टून डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो अगर मेरे कंप्यूटर में ये बड़ी-बड़ी हैवी ऐप्स हैं, बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं और उन सब का काम वीडियो पर है, उन सब का काम गेम बनाने पर है, उन सब का काम पिक्चर्स बनाने पर है, तो ऑब्वियसली मुझे एक बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा ताकि मुझे कलर्स तो नज़र आएँ सही से। तो अगर मुझे कलर्स ही सही से नज़र नहीं आएँगे सो ऑब्वियसली देयर इज़ नो रीज़न ऑफ अ कंप्यूटर। सो आई नीड अ वेरी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड ताकि मैं अच्छे से अपनी स्क्रीन पर वर्क कर सकूँ, मुझे अच्छे से कलर्स नज़र आएँ और मैं जो है उसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकूँ। इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिक्स कार्ड क्लियर? Got it? Okay. Yes, Murtaza, for you? What, miss? Is it clear? The graphics card. Did you understand what a graphics card does? Yes, yes. Okay, good. If you're not understanding anything in the between, so kindly stop me, okay? All right. Afterwards, give me 1 minute. All right. So after graphics card, we have our storage. Now, can anyone tell me what is the storage? Storage का मतलब क्या होता? Yes, Janet. It saves the data which we have stored and stuff. Yes, exactly. All right. What is storage basically? अगर हम अपने डिवाइस के अंदर कोई भी मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं, कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं, तो वो सब सेव कहाँ होती है? वो हमारे स्टोरेज के अंदर होती है। ओके। नाउ अब अगर मोबाइल के अंदर कभी हमारे पास ज़्यादा डेटा हो जाता है, ज़्यादा पिक्चर्स हमने उसके अंदर डाली होती हैं, बड़ी-बड़ी वीडियोज़ डाली होती हैं, तो एक मैसेज आता है कि यू आर रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस। देन वो हमें कोई और पिक्चर खींचने नहीं देता जब तक हम अपनी स्टोरेज को खाली कर देते हैं। राइट। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट स्टोरेज इज़। उसके अंदर हमारी सारी फाइल्स वगैरह, हमारी सारी मूवीज़, हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब स्टोरेज के अंदर सेव हो रहा होता है। सो इफ़ वी डू नॉट हैव अ स्टोरेज ऑब्वियसली देयर विल बी नथिंग दैट वी कैन सेव। एंड अगर स्टोरेज है तो वो कितने MB की है, कितनी GB की है, व्हाट MB, GB, ऑल ऑफ दिस स्टफ आर, we will be learning it in our further classes. Okay. तो अब वो कितनी, उसका साइज़ कितना है, स्टोरेज स्पेस हमारे पास बड़ी बड़ी वीडियोस को रख सकती है, उसका साइज़ के हिसाब से जो है हम स्टोरेज लेते हैं। जब हम मोबाइल बाय कर रहे होते हैं सो वी आर चेकिंग ना कि ये 128 GB का है, ये 1 TB का है, या हमने लैपटॉप बाय किया तो ये 1000 MBs का है। तो कितनी स्पेस है हम वो देख के चीज़ें ज़्यादातर बाय करते हैं। मतलब हमें अगर स्पेस और स्टोरेज स्पेस का पता होगा देन ही हम वो चीज़ बाय करेंगे। पता चला मोबाइल का कैमरा अच्छा है लेकिन उसके अंदर स्टोरेज ही नहीं है, सो देयर इज़ नो वे दैट वी कैन बाय इट, लाइक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही। तो कंप्यूटर्स हों, कंप्यूटर के अंदर तो हम स्टोरेज बाय करके उसके अंदर उसका स्टोरेज कार्ड हम डालते हैं। Okay, so we need storage to store all of our files, all of our data inside the storage space. And then last but not least, we have a mouse. It is a pointing device used to control the cursor on the monitor. Mouse can be wired or wireless. Now, स्क्रीन के ऊपर सब डिस्प्ले हो रहा है, CPU प्रॉपर्ली चल रहा है, वी हैव अ ग्राफिक्स कार्ड, वी हैव अ स्टोरेज। अब मुझे किसी चीज़ को क्लिक करना है, मुझे कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, क्लिक करने के लिए आई नीड समथिंग लाइक अ माउस। ओके, अगर मेरे पास एक माउस नहीं होगा सो आई वोंट बी एबल टू क्लिक ऑन एनीथिंग।
So I need a mouse for the screen, ताकि screen पे जो भी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं I can click it with it. ओके, अब माउस वायर्ड भी होता है एंड माउस वायरलेस भी होता है. वायरलेस माउस जो होता है वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है या एक छोटी सी पिन के थ्रू कनेक्ट होता है. एंड वायर्ड माउस जो है इट हैज़ अ लॉन्ग वायर इन इट. ऑलराइट. Now, we have an operating system. Operating system manages the hardware and software resources of a computer system, such as CPU, storage devices, and all the input and output devices. Okay. ओ एस हम इसको बोलते हैं, ओ एस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अंदर जितने भी पीछे प्रोसेसेस चलते हैं ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जो चल रहे होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू से लेकर स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट, इन सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको कनेक्ट करता है, उसका हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एचपी का लैपटॉप है तो उसके अंदर मेरे पास विंडोज़ चल रहा है. अब अगर मेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर, अब वो एंड्रॉयड मोबाइल है या उसके अंदर मैक है, उसके अंदर ओएस है, उसके अंदर लिनक्स चल रहा है, विंडोज़ चल रहा है, तो जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना मोबाइल या लैपटॉप के अंदर, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. तो लैपटॉप के अंदर किसी के पास विंडोज़ होता है, किसी के पास जो है मैक ओएस होता है. तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं. अगर विंडोज़ नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर ऑब्वियसली उसके अंदर हमें कुछ कोड्स नज़र आएंगे तो हम विंडोज़ इंस्टॉल कराते हैं. जाता है ना दुकान वाले के पास, जाते हो कंप्यूटर वाले के पास कि भाई मुझे इंस्टॉल कर दो, उसके अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर दो. अभी विंडोज़ 11 आया तो भाई विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर दो. तो हम उसको लेके जाते हैं या फिर हम अपनी सीडी खुद अपने पास आता है एंड देन वी इंस्टॉल दो स्टफ. तो दिस इज़ बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो रन करने के बाद जो हमारे पास लाता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. लाइक विंडोज़. अब विंडोज़, अब ये मेरा जो डेस्कटॉप है इसमें विंडोज़ इंस्टॉल हुआ हुआ है. अब ये मुझे कैसे पता चला कि विंडोज़ इंस्टॉल हुआ हुआ है? मेरे पास बैकग्राउंड आ रहा है, मेरे पास टास्क बार आ रहा है, मेरे पास ऐप्स आ रही हैं. अगर इस पर विंडोज़ नहीं होता तो ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं आती. मेरे पास एक ब्लैक स्क्रीन आती, कुछ वाइट कलर के कोड्स लिखे हुए, तो मुझे समझ भी नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है. इसलिए हम इसके अंदर ओएस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास जो है सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल और यूज़र फ्रेंडली मैनर में आ जाए. अगर ये कोडिंग लिखी हुई आ जाएगी तो क्या आपको समझ आएगा कि ऐप कहाँ से खोलनी है? क्या आपको समझ आएगा कि शट डाउन कहाँ से करना है? वो नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई वी नीड एन ओएस सिस्टम, ताकि हम जो है अपने विंडोज़ वगैरह वाली चीज़ें जो भी जितनी भी ऐप्स हैं हम वो सब चला सकें. ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क. एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज. सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें डाउनलोडेड हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं. मैनेज फाइल्स, प्रॉपर फाइल फोल्डर सिस्टम, मतलब सब सब कुछ बेसिकली ईजी है. ऐप्स इसके अंदर डाली हुई हैं, फाइल उसके अंदर डाली हुई हैं. चीज़ें अगर मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है सो वी कैन डाउनलोड. सिक्योर होता है ज़्यादातर. अगर विंडोज़ नहीं होगा तो उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होगी. विंडोज़ की अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है. नेटवर्क्स वगैरह हम इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं. यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं. यूज़र इंटरफेस मतलब जो हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे जो हमें चीज़ें नज़र आ रही है ना, बैकग्राउंड है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है. ऐप्स है, मुझे पता है इस पे जाना है, क्लिक करना है, बिल्कुल ईजिली मैं इसको ओपन कर सकती हूँ. तो ये मुझे प्रोवाइड करता है. लेकिन अगर मेरी स्क्रीन पे सिर्फ कोड्स बनवाएंगे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि भाई अभी क्या करना है. ओके. सो विदाउट विंडोज, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई लैपटॉप होगा ना तो उसमें इस तरह के कोड्स आते हैं. पहले इस तरह की प्रॉब्लम आई है आपके कंप्यूटर के अंदर? इस टाइप के कोड्स पहले नजर आए? अगर इस तरह के कोड्स वगैरह कुछ आ रहे होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विच मीन्स कि आपको अपना विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो कभी चेक करना, कभी देखना किसी के लैपटॉप में अगर विंडोज़ या कोई मैक जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल ना हुआ हो तो उनके पास ये वाली चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं. दैट्स वाई वी टेक इट टू द कंप्यूटर पर्सन जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें हमें इंस्टॉल करके देता है. एंड देन हम उसको दे देंगे भाई इसके अंदर विंडोज़, ये वाला विंडोज़ इंस्टॉल कर दो. हमें इंस्टॉल करके देता है. देन हमारे पास फाइनली जाके इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है, इस तरह का साफ सुथरा, कि हाँ अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है. ओके. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लियर. एनी प्रॉब्लम्स इन दैट? No. ओके. Others? No. All right. Can Okay, good. That's good. All right. Let's move forward. Now, difference between Windows and DOS. We are covering that in our further classes. All right. Give me 1 second.
Now, the history of Windows OS. अब different kinds of Windows के different versions आते हैं ना. अभी Windows 10 है किसी के पास Windows 11 है, Windows 12 अभी launch होने. Okay, yeah. So, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंडोज़ थे. ओके, विंडोज़ 7 था, विंडोज़ एक्सपी था, विंडोज़ नॉर्मल 2006 का, विंडोज़ विस्टा था, विंडोज़ 3.1 था. अब डिफरेंट टाइप्स के विंडोज़ में डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें होती थी. विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ये बिल्कुल प्रोफेशनल वर्जन है विंडोज़ के. लेकिन जितने भी पुराने वर्जन थे उसके अंदर पुराने काइंड ऑफ ऐप्स नज़र आ रही थी. इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं था. मतलब बिल्कुल नॉर्मल ऐसा लगा था बच्चों टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मतलब अच्छी खासी चीज़ें जो हमें आती जो समझ ही नहीं आती थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. अब जितनी भी न्यू विंडोज़ आई हैं उसके अंदर बेटर सिक्योरिटी है, इसके अंदर बेटर यूजेज है. हम बिल्कुल अच्छे से उसको यूज़र फ्रेंडली है, हम उसको अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं और बड़ी बड़ी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी है उसके अंदर बना हुआ है. पुराने अगर विंडोज़ 7 वगैरह की तरफ जाएंगे सो इट्स लाइक अ बिट हार्ड टू यूज़ इट. एंड अब जितनी भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं ना, जितनी भी न्यू ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, वो सब भी विंडोज़ 7 में उस तरह से इंस्टॉल नहीं होगा. विंडोज़ 7 के अंदर अच्छी खासी चीज़ें फिनिश होती जा रही हैं. डिफरेंट जो ऐप्स के क्रिएटर्स हैं वो विंडोज़ 7 के अंदर से चीज़ें हटाते जा रहे हैं क्योंकि विंडोज़ 7 अब पुराना हो गया. वो लोग विंडोज़ 8 से भी हटा रहे हैं, विंडोज़ 7 से भी हटा रहे हैं. So if any of you have Windows 7 still, it's better कि आप Windows 10, 11, 12 इन सब पे अपग्रेड कर दो. 12 खैर अभी तक आया नहीं है but it's going to come soon. लेकिन Windows 10 and 11 पे इसलिए अपग्रेड करने का कह रहे हैं क्योंकि Windows 7 के अंदर से बहुत सारी चीज़ें फिनिश हो रही हैं. What Windows software do you have? Do you guys have? Yes, Windows 10, uh, Windows 11. Yes, Murtaza. Kiran, how about you? Windows 10. Windows 10. Okay. 10. Okay, that's good. You guys are understanding, huh? अगर बीच में कोई भी चीज़ if you guys are missing, so do let me know, okay? Right now I'm assuming कि आप लोगों को समझ आ रहा है whatever I'm telling you. Okay. Then, desktop environment. A desktop environment typically consists of icons, windows, toolbars, folders, wallpapers, and desktop widgets. Basically, it is responsible for the working of tools present in desktop, which makes your computer work smoother. Now, विंडोज़ इंस्टॉल हो गई, सब कुछ हो गया, सीपीयू वगैरह सब कनेक्ट हो गया. अब जब आप विंडोज़ डाउनलोड कर लोगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आती है ना वो ये स्क्रीन आती है. इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं. ओके, DESKTOP, डेस्कटॉप. ना वाई इज़ इट कॉल्ड डेस्कटॉप? क्योंकि इसके अंदर सारी ऐप्स होती हैं. कोई भी फाइल्स हमने इंस्टॉल की होती है वो इस तरह से नज़र आती है. सारी ऐप्स यहाँ टास्क बार के ऊपर नज़र आती है. ये जो नीचे वाली लाइन है ना, जो ब्लैक कलर की लाइन है जिसके अंदर सर्च बार है, ऐप्स हैं, this is called our taskbar. Wait, let me screenshot this. Okay, this black line, this is our taskbar. एंड यहाँ साइड पे जो हमारे पास आ रही हैं ये सारी हमारी फाइल्स हैं. ओके, फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं ये हमारे. और इसके अंदर ये जो पूरी स्क्रीन है ना बेसिकली ये हमारा डेस्कटॉप है. DESKTOP, डेस्कटॉप. ऑलराइट. ये जो हिस्सा है ना इसको क्या बोलते हैं? ये जिसके अंदर हमारे वॉल्यूम एंड हमारा वाईफाई वगैरह ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं जिसमें साइड पे कैलेंडर्स वगैरह नज़र आ रहा होता है. इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव आइकन्स. ओके, आई एम नॉट गोना राइट दैट हियर क्योंकि वो बहुत स्लोली राइट कर रहा है. लेकिन इट्स कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव आइकन्स. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सारे मतलब नेटवर्क वगैरह वाली चीज़ें, वॉल्यूम वगैरह वाली चीज़ें जिसका हमें अच्छा खासा यूज़ होता है. हम बार बार वॉल्यूम को जाके इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, हम बार बार जाके अपना नेटवर्क चेक कर रहे होते हैं, बार बार जाके चार्जर चेक कर रहे होते हैं कि कितना चार्ज है.
सही, तो दैट्स वाई इट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव आइकन्स दैट आर वर्किंग मोर देन एनीथिंग इन द होल कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा यहीं पे हम बार बार आ रहे थे कि भाई नेट बंद हो गया, ये अब कितना चार्ज रहता है। ओके, so that's why it is known as our administrative icons. These are our files. The whole thing is called desktop. यानी नीचे वाली जो ब्लैक लाइन है जिसके अंदर ये आइकन्स हैं, जिसके अंदर सारे एप्स वगैरह हैं, सर्च बार वगैरह है, ये हमारा टास्क बार है। Alright, any questions still here? Turn on your mic or write in the chat box. Okay, clear, that's good. Alright, after that, that was our desktop environment. Then we have our icons, जो मैंने अभी अभी आपको शो किए, different kinds of icons हैं। ये जो हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है। पिक्चर्स के छोटे छोटे आइकन्स, मतलब जो भी पिक्चर होती है उसका छोटा सा एक आइकन बना हुआ आ जाता है। फोल्डर्स का आइकन इस टाइप का होता है। कोई भी ऐप है, जिप फाइल है, तो उसका आइकन इस तरह का होता है। ये आइकन्स है बेसिकली, जो हमें ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सारे बेसिकली आइकन्स होता है। कैन इवन इंक्रीज द साइज ऑफ इट। ऑलराइट, ये आइकन्स है। अब अगर कोई पिक्चर होती है तो पिक्चर छोटी सी नज़र आ जाती है। कोई फाइल होती है, मतलब टेक्स्ट फाइल होती है, तो इस तरह का पेज होता है। एप्स जो होती हैं उनके डिफरेंट आइकन्स खुद से बने हुए होता है। ऑलराइट, देन आफ्टरवर्ड्स icons we have our icons types, अभी जो मैंने आपको बताई। System icon, when we install any operating system, some icons come with it by default. These icons were seen on our desktop screen like my computer, my document, recycle bin, control panel, network, etc. आइकन्स जो हैं, फर्स्ट टाइम अगर मैं ये लैपटॉप के अंदर कुछ इंस्टॉल करूँगी तो वो मुझे बेसिक आइकन्स इसके अंदर दे देगा। मतलब अब अभी मैंने जस्ट इसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल किया है, सही है, न्यू लैपटॉप है, न्यू लैपटॉप ओपन किया है। तो जब कोई नई स्क्रीन ओपन करता है तो उसके अंदर हमें ये ऐप्स डाउनलोडेड तो नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि मैंने अब तक अब इसमें कुछ डाउनलोड नहीं किया। तो मुझे इसमें कुछ डाउनलोडेड ऐप्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे, वो बिल्कुल क्लीन होगा। लेकिन उसके अंदर बेसिक आइकन ये वाला इंस्टॉल्ड होता है, रिसाइकल बिन। सबसे जो बेसिक आइकन होता है ना, इट्स दिस वन, वेट, दिस रिसाइकल बिन। सही है, मैंने न्यू अगर डेस्कटॉप इंस्टॉल किया, इट्स माय फर्स्ट टाइम यूजिंग माय डेस्कटॉप, फर्स्ट टाइम विंडोज़ इंस्टॉल किया, तो इसके अंदर सबसे बेसिक आइकन ये रिसाइकल बिन का होता है। और यहाँ पर कुछ माय कंप्यूटर वगैरह वाले आइकन्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ से हटाए हुए हैं। लेकिन कुछ बेसिक आइकन्स आ रहे होते हैं जो फोल्डर का कोई आइकन होता है, जो कि ऑलरेडी उसने मुझे बना के दिया हुआ है, वो मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया। Anybody know what recycle bin does? Can anyone tell me? It deletes the unused app, like whatever we put in it. Yes. Others? What does it? Do you know what recycle bin does? It kind of like a bin of apps that if you have downloaded like some cartoon or that thing, so if you don't want it, you put it in the recycling bin. Exactly. Good. Alright. This is what basically recycle bin does. अगर हमें कोई भी चीज़ डिलीट करनी है, सो वी पुट इट इनसाइड द रिसाइकल बिन, या हम नॉर्मली उसको डिलीट कर देते हैं, एंड देन जो है वो ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है, क्योंकि रिसाइकल बिन जो है इट हैज़ ऑल आर डिलीटेड स्टफ इनसाइड। लेकिन रिसाइकल बिन का मेन फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये HTML का जो लोगो है इसको मैंने डिलीट कर दिया अपने पास से। ओके, लाइक दैट, कीबोर्ड से यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ नीचे delete. I deleted it. Now it went inside the recycle bin. Okay, that's how it works. Now यहाँ पर जो मेरा आइकन है, आई कैन शो यू दिस वन, ये मैंने डिलीट किया था। अब मैं इसको वापस इसलिए ला सकती हूँ, मतलब रिसाइकल बिन का मेन काम ये है कि मैं अगर किसी चीज़ को डिलीट कर दूँ तो मैं उसको अपने पास वापस ला सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मेरी कोई फाइल थी और मैंने उसको गलती से डिलीट कर दिया। नाउ आई वांट इट बैक। तो अगर मुझे उसको वापस लाना है तो मोबाइल के अंदर हम ढूंढ के थक जाएंगे, लेकिन कुछ ही मोबाइल्स हमें इस टाइप का रिसाइकल बिन देते हैं। ज़्यादातर मोबाइल्स में तो हमने एक दफ़ा डिलीट कर दी तो वापस नहीं आता। सही। लेकिन लैपटॉप के अंदर रिसाइकल बिन का फ़ायदा ये है कि अगर आपने कुछ डिलीट किया तो उस रिसाइकल बिन के अंदर आपके पास आ रहा होगा, आप उस पर राइट क्लिक करो और उसको रीस्टोर कर सकते हो। रीस्टोर का मतलब वो वापस आपके कंप्यूटर में वापस आ जाएगा। सो नाउ इफ आई सी द HTML logo is back. सो But ये wouldn't it बेसिकली take more space up? हम्म Wouldn't it take more space up?
asking the question? Me. It रिसाइकल बिन के अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल मैंने ये डिलीट किया ना, तो स्पेस मेरी स्टिल जो है मतलब कम नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑलराइट, कैन यू गाइस हियर मी? या ऑलराइट। हाँ, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये लोगो जो है HTML का मैंने इसको डिलीट कर दिया है, लेकिन मैंने अभी रिसाइकल बिन से इसको हटाया नहीं है। जो स्टिल वो मेरे कंप्यूटर में है ना, मतलब वो स्टिल रिसाइकल बिन के अंदर है। मतलब मेरी स्पेस स्टिल ख़त्म नहीं हुई है, स्पेस स्टिल रहती है, मतलब उतनी ज़्यादा उसने स्पेस स्टिल दी हुई है। लेकिन अब अगर मैं उसको रिसाइकल बिन से ही जो है यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, अभी मुझसे पूछेगा यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, मैं जैसे ही इसको डिलीट करूँगी तो मेरे पास स्पेस आ जाएगी। ओके, तो जब तक रिसाइकल बिन के अंदर चीज़ है ना, तब तक मेरे पास स्पेस जो है वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जैसे मैं रिसाइकल बिन के अंदर से चीज़ डिलीट कर दूँगी तब मेरे पास स्पेस रहेगी। ओके, नाउ afterwards we have shortcut icons. The shortcut icon looks very simple, but a small icon in the right corner indicates it's not original icon. शॉर्टकट का बेसिकली मतलब ये है कि जितने भी आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, लेट मी मेक इट लार्जर, ये क्रोम का आइकन नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। यू सी द लिटिल एरो ओवर हियर, ये जो छोटा सा एक एरो बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, इसके ऊपर भी एक एरो बना हुआ है, इस पर भी एक एरो बना हुआ है। ये एरो बेसिकली क्या चीज़ है? इट मीन्स ये ओरिजिनल ऐप नहीं है, ये इसकी कॉपी है, ये इसका शॉर्टकट है। अब अगर हम कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में, सो एंड वी नो कि भाई ये शॉर्टकट है, यहाँ से जल्दी चले जाता है, तो हम वो शॉर्टकट वे ले लेते हैं, राइट? तो शॉर्टकट ऐप्स का भी बनता है। अब मुझे ओरिजिनल ऐप कहाँ पे मिलेगी? जो मैं यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाकर जब सर्च करूँगी ना, यहाँ पर आकर मैंने लिखा क्रोम, ये ओरिजिनल ऐप है। यहाँ पर कोई वो नहीं बना हुआ, एरो नहीं बना हुआ, तो ये ओरिजिनल है। लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर वहाँ पर ऐप इसलिए है क्योंकि ये एक शॉर्टकट है। अब मुझे बार बार ताकि विंडोज़ के अंदर जाके सर्च नहीं करना पड़े, इसलिए इसने मुझे यहाँ पे एक शॉर्टकट दे दिया कि भाई जल्दी से यहीं पे क्लिक करो, यहीं से ही चले जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार सर्च करने जाके टाइप करने की। शॉर्टकट ऐप किस तरह बनती है? आप स्टार्ट मेन्यू में जाते हो, यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, इस पर राइट क्लिक किया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं, किसी भी ऐप पे राइट क्लिक करके यहाँ पर शॉर्टकट का एक ऑप्शन आता है, क्रिएट शॉर्टकट। ये इट गिव्स मी एन ऑप्शन ऑफ क्रिएट शॉर्टकट, ताकि मुझे बार बार यहाँ पर आके ऐप को नहीं ढूंढना पड़े। मैं शॉर्टकट पे क्लिक करूँगी। अब मैं यहाँ पर ऑब्वियसली शॉर्टकट नहीं क्रिएट कर सकती, लेकिन डू यू वांट अ शॉर्टकट टू बी प्लेस्ड ऑन डेस्कटॉप, तो ये मेरे लिए डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट क्रिएट कर देगा। तो वहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ आ जाएगा। तो जिस भी ऐप पे एरो बना हुआ होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो एक शॉर्टकट ऐप है, वो हमारी ईज़ के लिए जो है वो यहाँ पर रखी गई है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट बैक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? शॉर्टकट समझ आया? शॉर्टकट आपका मतलब क्या होता है? Yes. ओके, ओके किरण। मुर्तज़ा, व्हाट अबाउट यू? शॉर्टकट समझ आया या कोई प्रॉब्लम Yes, है? आ गया? कैन यू टेल मी व्हाट द शॉर्टकट डज? the shortcut does that you don't have to search the like Chrome, so you don't have to search Chrome. Like so it shows an option of Chrome. Just click on it and it directly opens. गुड। एंड हाउ डू आई नो कि एक ऐप शॉर्टकट ऐप है? जन्नत, कैन यू टेल मी? By the arrow on it. बाय द एरो ऑन इट। गुड।
Then we have a program, folder, and document icon. Or does anyone have a question? Okay. Program, folder, and document icon. This is talking about this kind of icons. कोई folder होता है तो उसका आइकन इस टाइप का होता है कि ये फोल्डर बना हुआ है ना यहाँ पर, ये फोल्डर्स बने हुए हैं. दिस इज अ फोल्डर आइकन. ये एक जिप फाइल का आइकन है. Let me tell you a real life example of what these are. This is a folder icon. I'm just going to remove these. Okay. Okay. This icon. Yes, anybody wants to ask a question? This icon over here, ये एक फोल्डर बना हुआ है ना. As we can see, येलो कलर का फोल्डर है, उसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं. ये एक जिप फाइल है. अब अगर मुझे कोई मेरे पास रियल लाइफ में कुछ पेजेस हैं, मुझे उसको फोल्डर में रखना ताकि मैं उसको जल्दी से निकाल सकूं, वो ज़्यादा सिक्योर ना हो. मतलब अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है स्कूल के अंदर और मुझे कहा है कि एक फ़ोल्डर के अंदर चीज़ें आप संभाल के रख दो, मैं उसको फ़ोल्डर में डाल दूँगी. लेकिन अगर वो फ़ोल्डर हल्का सा भी खुल गया तो सारी फाइलें नीचे गिर जाएंगी, वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता. दैट्स अ फ़ोल्डर आइकन. किसी भी चीज़ का फ़ोल्डर बना लो. ये क्या काम करता है, ये ज़िप फाइल आइकन, ये ज़्यादा सिक्योर होता है. अब अगर वही फाइल्स जो मेरी बार बार नीचे गिर जाती हैं, अब मैं उस फोल्डर को उठाकर एक जिप के बैग के अंदर डाल दूँ ना, एक जिप वाला एक बैग होता है उसके अंदर डाल दूँ, तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा. उस पर पानी गिर जाए, उसके ऊपर या हवाएं आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो नीचे नहीं गिरेंगे पेजेस, क्योंकि वो एक बैग के अंदर है. राइट. सो दैट्स अ जिप फाइल. फोल्डर, जिप फाइल. ओके. फोल्डर ज़्यादा सिक्योर नहीं होता. मैं इस पर जस्ट डबल क्लिक करूँगी, फाइलें खुल जाएंगी, कोई भी उठा के मेरी फाइलें देख लेगा. जिप फाइल ज़्यादा सिक्योर इसलिए होता है कि जब आप डबल क्लिक करते हो ना, तो वो एक सेफ मोड के अंदर खुलता है. अब अगर मैंने इसके ऊपर पासवर्ड लगाया होता तो पहले मुझसे पासवर्ड पूछता, देन मुझे अंदर आने देता. ओके. इसके अंदर पासवर्ड लगाने के भी ऑप्शन होता है, वो हम आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह लगता है. तो दैट्स वाई जिप इज़ अ मच सेफर ऑप्शन. ये देखो जिप किस तरह खुलता है, और अगर मैं फोल्डर खोलूँगी तो मुझे फ़ौरन से खोल के दे देगा. तो ज़्यादा सेफर जो है वो हमारा जिप फाइल वर्जन होता है. ओके. जिप फाइल कैसे क्रिएट करता है और फोल्डर किस तरह क्रिएट करता है. नाउ फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप अपने डेस्कटॉप पे आओगे. यहाँ पर मैंने किया राइट क्लिक कहीं पे भी, और यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू का. न्यू पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा फोल्डर. ओके. यहाँ फोल्डर भी है, यहाँ जिप फाइल भी ऑप्शन है. विनरार आर्काइव होता है ना, ये जिप फाइल का ऑप्शन होता है. ये फोल्डर है. मैंने फोल्डर पे क्लिक किया, फोल्डर का नेम पूछ रहा, मैंने फोल्डर का ईमान नेम दे दिया. ओके. ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया. अब इसके अंदर मैंने उठा के ये फाइल अंदर डाल दी, ये फाइल अंदर डाल दी. अब ये ईमान के फोल्डर के अंदर ये 2 फाइल्स आ गए हैं. ओके. So that's how you create a simple folder. Now, if you want to create a zip file के लिए आप किसी भी चीज़ पर राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पर होगा ऐड टू आर्काइव का ऑप्शन. जिस फोल्डर को आपको जिप में डालना है ना, जिस फोल्डर को बैग में डालना है, उस पर आओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ लिखा है ऐड टू आर्काइव, उस पर क्लिक किया. ये आपसे पूछेगा, आपको जस्ट ओके करना है. पासवर्ड लगाना है तो सेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है. मैंने उस पर फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड लगा दिया 123, इस पर भी 123 लिख दिया. सही है. शो पासवर्ड किया, 123 आ रहा है. ओके किया, इसको भी ओके किया. अब मेरा जो है जिप फाइल क्रिएट हो Screen गई is है. stuck. कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? इज माई स्क्रीन विजिबल फॉर एवरीवन? Yes, just your Yes. screen is stuck. ओके गुड. Jana, please mute your mic. ऑलराइट गुड. सो नाउ अब मैंने ये ईमान वाली जो फोल्डर है उसकी मैंने एक जिप फाइल बना दी है. जिप फाइल में पासवर्ड भी लगा दिया है. अब वो जिप फाइल यहीं पे कहीं मेरे पास होगी, तो यहाँ पर इसने मुझे ईमान की जिप फाइल बना दी है. ये रही मेरी. अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी और इसने जो है मेरा ये बना दिया पासवर्ड. पासवर्ड इसने मुझसे अभी नहीं पूछा है क्योंकि मैंने अभी अपना पासवर्ड इनेबल नहीं किया, लेकिन पासवर्ड वगैरह किस तरह लगता है ये मैं प्रॉपर्ली आपको फर्दर क्लासेस में बताऊँगी. ओके. ये जस्ट मैं आपको आइकन्स के बारे में बता रही हूँ कि आइकन्स किस तरह के होते हैं और कैसे क्रिएट होता है. तो ये से मुझे एक फोल्डर बना इसका जिप फाइल बना के दे दी. दैट वाज प्रीटी इजी. ओके. फोल्डर, जिप फाइल, और इन दोनों के आइकन्स इस टाइप के होता है.
Now afterwards we have a start button icon. Start button icon जो है where all the programs and applications were displayed on the computer. This one, ये जो icon नज़र आ रहा है बिल्कुल स्क्रीन के कोने के ऊपर wait, this one, ये जो आइकन है ना ये स्टार्ट का आइकन है. ओके, इफ आई क्लिक ऑन इट देन यहाँ पर मेरे पास मुझे शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, स्लीप करना है, जो भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर जाकर मैं अपनी ऐप सर्च कर सकती हूँ, कुछ भी लिखना है, कुछ टाइप करना है, आई कैन गो अहेड एंड सर्च ओवर हियर. दैट्स द स्टार्ट आइकन, दिस काइंड ऑफ विंडोज जिसमें बना हुआ है, और ये आइकन हमारे कीबोर्ड पे भी होता है. ओके, and what's the taskbar icon? At the bottom of the desktop there is only a strip called taskbar. ये जो मैंने आपको पहले बताया था, this, ये जो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप है, ब्लैक कलर की लाइन है, इट्स आवर टास्क बार. ओके, और टास्क बार कैसे रिकग्नाइज होता है? उसके अंदर एक सर्च बार होता है, उसके ऊपर ही स्टार्ट बटन होता है, और उसके ऊपर सारी एप्स होती हैं, डिफरेंट आइकन्स होते हैं, और इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव आइकन्स भी होते हैं. सो दैट्स हाउ वी रिकग्नाइज द टास्क बार. ऑलराइट, any question on any icons? Do anyone have any question? Clear, okay. Murtaza, clear for you? Do you want to ask something? Hmm. Yeah, no, miss. Okay, that's good. All right. Afterwards, we have personalization, and then we will be done for today. So I'm just going to take you towards a little bit of personalization. Oh, wait a minute. Yes, Murtaza? Miss, can I get the class recording? Mm-hmm. Class recording to recall. Yes, yes, you will be getting a class recording afterwards. Okay? Just give me 1 second, please. My mouse is not here. Can you guys wait for a few minutes? I'm just going to restart my laptop because यहाँ पर माउस मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. Okay, stay in the class. I'm just restarting. Okay. So now we're going to try and change the desktop wallpaper. Okay, so you will come on this empty area on your desktop. यहाँ पर right click करना है, नीचे आएगा personalize. Okay, this last option, personalize, you will click on it,
and it will take you inside the settings to where you can change your desktop background from. Okay, there we go. Now अब यहाँ पर इसने हमें desktop background दिखाया हुआ है. You can go ahead, यहाँ पर different kinds of pictures नीचे आ रही होंगी. You can click on any of them and you can use them. Now before I tell you how to use this, go ahead and try it by yourself, and then I will tell you कि यहाँ basically आपको किस तरह use करना है. Okay, तो इस तरह की background की screen you will be seeing. आप अपने पास कंप्यूटर के अंदर ये personalize के option पे जाओ, and यहाँ पर try and change the background. चेंज द पिक्चर बैकग्राउंड, चेंज द स्लाइड शो बैकग्राउंड, खुद से कोई पिक्चर लगा के देखो. एंड अगर नहीं आया तो लेट मी नो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सी आप लोगों को कितना आता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल ट्राई बाय माई सेल्फ. ओके ओके मुर्तज़ा, जन्नत, किरण. Yes, Okay, go ahead and try it by yourself and then let me know. I did. I tried it. Okay, Jannat. Murtaza, you're changing the background? Uh, yes, miss, I tried it. I put uh, uh, I put on the same background, but by closing it, I put just put the same background. But I Okay. didn't. Kiran, are you trying the background option? Please tell me. Oh, okay, okay. Yes. Miss, I just put on the background in when I were taking last of it classes, Canva classes. Hmm. I made this that Spider-Man Yes, yes. picture Hmm. I could design. So I put that on picture on Okay. the background. That's good. Kiran, what about you? Were you able to do it? All right. So, yes, I'm telling you how to what to do next. Okay. If you see, you would have changed the background from right over here. Okay. Now there are three modes: picture, solid color, and slideshow. Now in the picture one, वो आपको खुद से कुछ pictures यहाँ पे provide कर रहा है जो Windows की itself है. Okay. Now if you are going for a more professional look, आप यहीं से कोई भी picture को click करके अपना background पे लगा सकते हो. Okay. There's choose a fit. You want to fit it, stretch, tile, center. ये अगर मैं tile पे जाऊंगी तो ये tile पे इस तरह से नजर आएगी.
stretch, it will look a little bit, if the picture is small then वो उसको stretch कर देगा, छोटी सी नहीं आएगी. There is span. We basically go for fit mostly ताकि वो screen पे fit हो जाए. Sorry, fill. Okay. Then there is an option to browse over here. अगर browse पे जाओगे तो आप खुद की कोई भी picture यहाँ से निकाल के जो है अपने पास लगा सकते हो. So for example, if I go on to desktop and I click on this one, तो अब ये पिक्चर इसने यहाँ पे लगा दी है. सही है. So I can go into browse and मैं अपने desktop की pictures यहाँ से जाकर change कर सकता हूँ. Or if I want a normal one, I can go ahead and choose a picture from right over here. Now if you click on this picture option, यहाँ दो option है, solid color and slideshow. Solid color के अंदर you can just put one color on your background, any of the one colors from over here. Okay, जो ये provide कर रहा है. तो इसने just one color का एक background लगा दिया. And if you want a custom color, आप custom color में जाके अपना खुद का color भी ले सकते हो. And then there's slideshow. I know this is very basic, लेकिन ये सबसे basic चीज़ है ताकि हमारे पास थोड़ा सा review हो जाए. Okay, slideshow में पिक्चर्स आपका एक एल्बम सेलेक्ट हुआ है. स्लाइड शो 1 मिनट बाद, हर एक मिनट बाद जो आपकी पिक्चर चेंज करता है. ओके. शफल मतलब सारी रैंडमली आ जाए. और चूज़ अ फिट फिल. ओके. अगर आप ब्राउज़ में जाओगे ना तो अपनी खुद की पिक्चर्स यहाँ पे लगा सकते हो. अगर मैं ब्राउज़ में जाती हूँ तो मुझे कोई ऐसा फ़ोल्डर यहाँ पे ढूंढना है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स मैंने सेव किया हैं. तो अभी हमने एक फ़ोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे ईमान के नेम का, जिसके अंदर 2 पिक्चर्स थे. I'll choose that folder. अब ये फोल्डर से जितने भी पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे. ओके. एंड ये 1 मिनट बाद जो है यहाँ पर चेंज हो जाएंगे. See, now after 1 minute it changed to this one, Canva. You can even set the time limit कि इसको कितनी कितनी देर बाद चेंज करना है. 1 मिनट में करना है, 10 मिनट्स में करना है, 30 मिनट्स. इस टाइम भी लगा सकते हो कि 6 आवर्स बाद पहले सनसेट पे सनसेट की पिक्चर लगा दी, देन दोपहर में दोपहर टाइप की पिक्चर लगा दी, शाम में शाम की पिक्चर लगा दी. सो अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. यू कैन डू दैट एज वेल. और जो नॉर्मली सेलेक्ट होता है वो ब्राउज़ में कोई पिक्चर्स के अंदर कुछ सेलेक्ट हुआ होता है, I guess. Yes. So you can go ahead and choose that, or you can just go for a normal picture that is right over here. Alright. Then, other than background, we have this option of colors right over here. Before colors, let's look over this lock screen option. जब आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ एंड एल आपके कीबोर्ड पे देखो 2 कीज़ होंगी. एक तो स्टार्ट टाइप का विंडोज़ टाइप का कुछ बना हुआ होगा, उसको प्रेस करके रखना है. एंड देन इफ़ यू क्लिक एल तो alright, you can see the keyboard over here, and जो टाइप करना है वो भी you can see right over here on this. Okay. Start doing it. इसको 10 times करो and let me know how fast did you do it, or tell me the difficulty, like कितना difficult था ये. Okay, type this 10 times. Yes, who wants to ask a question? Any questions? Okay, good, Janet. Others, please do it. When you guys are done, just let me know, okay? Miss, I'm done. Did you do it 10 times? Yes. And did you face any difficulty doing it? No. Did you do it by placing your fingers over here जिस तरह मैंने बताई हैं? Yes. Okay. Do it another 10 times, Murtaza. Do it again.
Okay, good, Kiran. So everyone is done. Murtaza, Kiran, Janat. Let's move forward to the next tapping thing. Done. Okay, good. Alright, next what you have to type, if you see it on my screen. अब हम थोड़ा सा हार्ड वाले पे जाते हैं. अब अपनी फिंगर्स स्टिल उसी लेटर्स पे रखनी है जहाँ पर अभी है. ओके, डू नॉट मूव योर फिंगर्स फ्रॉम देयर. कीप योर फिंगर्स देयर, लेकिन एक एक फिंगर को ऊपर डाल के, मतलब एक एक फिंगर आपकी ऊपर जाएगी एंड देन यू टाइप क्यू, देन वन फिंगर ऊपर जाएगी WERTYUIOP एंड या दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू हैव टू टाइप. आपकी फिंगर्स आपकी उसी सेम जगह पे होंगी जहाँ पे पहले थी. ओके, ASDF पे, लेकिन आपको वन वन फिंगर ऊपर लेके जानी है एंड देन यू हैव टू टाइप क्यू. देन उस फिंगर को वापस अपनी जगह पे लाना है. देन फिंगर ऊपर लेके जाओगे टू W, देन फिंगर वापस जगह पे आएगी. ऊपर फिंगर्स रख के ये टाइप नहीं करना है. आपको फिंगर्स वहीं रहने देनी है ASDF पे, लेकिन एक एक फिंगर ऊपर जाएगी एंड देन यू हैव टू टाइप इट लाइक दिस. ओके, एनी क्वेश्चंस इन दिस? Fingers should be kept on the same place as it was before. All right. Kiran, is it clear for you? What about you, Murtaza? Okay, good. Murtaza, Yes. is it clear how you have to type this? Yes. Okay. The keyboard is still on the screen. Type this one also 10 times. Miss, I typed it 10 times. Okay, Murtaza, how did you type it? Can you tell me? Did you have your fingers on the same place as before? फिंगर्स आपकी ASDF पर ही थी ना, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? यस मर्तज़ा. Hello. Uh, uh, I was typing with my fingers on the same place as on the screen. Okay, and then you did the QW. Okay. Was it easier than the first one or was it a little hard? It was a little hard than the first one. Okay. Can you type it 5 more times, please? Okay. Okay, and when you're done, Kiran, also let me know, please. Miss, I wrote it 10 times. I mean 5 times. Okay, good, good. What about you, Kiran? Are you done? Okay, that's great. Good, Janat. Alright, now let's go towards our last thing. That is going to be. Acha, why am I giving you guys these stuff? Taaki you guys get familiar with all the letters, okay?
एंड ये मैं सिर्फ आज कराऊंगी एंड देन ऑन डेली बेसिस वी विल बी वर्किंग ऑन टू द गेम कि गेम के ऊपर इस तरह टाइप करके हाउ मच स्पीड वी गेट. Alright, so now what you have to type, if you see on the screen, okay, now what you have to type, you have to keep your fingers on the same place as before, ASDF pe, okay, but this time you have to type Z X C V B N M comma and dot, okay. Keep your fingers on the same place, ASDF पे fingers होंगी, but you have to bring them down, Z, okay, then bring them to the normal place again. अपनी जगह पे वापस लाना है fingers को. X C V B N M comma and dot. You have to type this 10 times as well. Alright? Z X C V B N M. Any questions? Keep your fingers on the same place though, okay? Any questions? Murtaza, Kiran? Got it? Okay. What about you, Murtaza? Got it. Okay, if you're not, if you don't know what to do, just let me know, okay? So that I can help you. When I have students in my institute, at my institute, so I can see what they're doing. But in online, I'm not able to see what my students are doing, so that I only have to assume. So I'm hoping that you guys are not cheating and doing it honestly, okay? Miss, I have wrote 10 times. You did it? Yes. Did you do it the same way I told you, or you just do it with one finger? No, I do it. I did it like in the book. The I did in the Okay, both okay. times. Okay, can you do it 5 more times then? Yes. Done. Okay, good. What about you, Kiran? Are you done? It's getting difficult, but I'm doing okay. When you're done, just let me know, okay? And the more difficult you find it, try and do it the more times, okay? अगर ये आपको 10 times में difficult लग रहा है तो आप 10 more times करो, so that you can like get to the level of ease, because you have to keep doing that and it will get difficult. क्योंकि अभी I will when I give you the game again, I'm pretty sure that both of your typing speed will be reduced, because this one is something new and it will increase your typing speed later after a lot of practice, okay? So when you're done, Kiran, tell me so that we can move on towards the game now.
Okay, Kiran. Yes, Murtaza? We are moving now? You're moving now? You're done? Yes. Okay, good. All right. So now what I want you guys to do, I want you guys to open the game again. Okay. अब आप लोगों की जो speed है ना, it will be calculated on the basis of the fingers now. आपको उसी तरह hands रखने हैं, this way, the way I've showed you over here. Okay. Keep your fingers like this and then type in the game. अगर कम भी आ रही है, कम typing speed आ रही है, so there is no problem. Just let me know, okay, कि आपकी कितनी स्पीड आ रही है. There is no embarrassment, there is no one telling you guys वो इतनी ज़्यादा कम आ गई. There's no problem क्योंकि I've seen a lot of people जिनकी normally जिस टाइम वो टाइप करते हैं उनकी 50-60 आ रही है, but when they're typing with these kind of fingers उनकी टाइपिंग स्पीड 3 आ रही है, 4 आ रही है. So there is no problem in that क्योंकि हम इस तरह से टाइपिंग करेंगे and then afterwards after this course आपकी वैसे भी increase होनी है स्पीड. Okay. Put your fingers like this and start the game. I've shared the link with you in the chat box. Okay. And if you face any problem, let me know. When you're done, tell me. Okay. Go ahead, do the game, and then we will end our class. Tell me what WPM you got. Miss, I have played the game. I got the same number, same speed as You the got first. speed 10? Yes, I got. That's amazing. Did you keep your fingers the way I told you to, as in the picture? Yes. That's good. Okay. Murtaza, you have to keep practicing. Okay. We have to get towards the speed of 60. Okay. Okay. All right. Kiran, when you're done, let me know, please.
Okay, Karen, what was your WPM this time? It's 10. See? No worries if it's reducing and no worries if it's still the same. We will get to 60. I'm pretty sure of it. Alright, and we will beat Jannat. Uh, okay. Alright. So that's it for our class today. If you guys have any questions, ask me right now. I'm also going to share you guys the link of the recording of today's class. Okay, and if you face any difficulty doing the assignment is this one. You have to uh, check out what is a screensaver. Okay, Murtaza, Kiran, is the assignment clear? You have to see what a screensaver is. आपको start menu में जाना है, यहाँ पे लिखना है screensaver. एंड ये जो फर्स्ट ऐप आपके पास आ रही है ना, चेंज स्क्रीन सेवर, इसमें जाना है, इसको एक्सप्लोर करना है, ये क्या काम करता है, what does a screensaver mean. We have to check out all of these stuff and we will meet tomorrow at 3 p.m. and I will be asking you questions. So if you face any difficulty or anything, you will be able to ask me tomorrow. I'm also going to share you guys the link of the recording, and if you guys have any further questions, I've created a WhatsApp group. आप उस पर भी अपनी achievements और अपने क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू गॉट एनी अचीवमेंट और व्हाटएवर, लाइक यू डिड एनी असाइनमेंट, या फिर कोई भी मतलब फर्दर कोई भी चीज़ अचीव किए, यू कैन सेंड इट टू मी ओवर देयर. यस मर्तज़ा? Um, Nothing. I was saying anything. Okay. All right. Is everything clear? You have any questions, anyone? No. Okay. Kiran? Kiran, how about you? Got it? Alright then, I will see you guys inshallah tomorrow. Let me know on the WhatsApp group if you're done with the assignment and what did you figure out. Alright? And I'm sending you all the stuff over there as well. Alright, see you. Allah Hafiz. Bye. Bye. Thank you. कल